about that startups में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है. तुझे अगर करना है, सीखना है अच्छे से, गो विद अ स्टार्टअप, डोंट गो फॉर एमएनसी. तुम बड़े कंपनी में भी सीखोगे, बट द स्केल वुड नॉट बी दैट. Whether like you have worked on back end, front end, then the DevOps is there. So and clouds is there. So which platform or which field you wanted to go with majorly, like cloud or like development? My personal opinion as an engineer is like no technology is good or not. Fresher as a fresher, certifications करनी चाहिए. Certification helps, but the most important thing you should have those skills. तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना करियर IT नॉन IT बैकग्राउंड से है, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसने काम नहीं किया कोई प्रोजेक्ट्स पे, तो वो कैसे बिल्ड करेगा अपना पोर्टफोलियो? बेसिक प्रोजेक्ट आप पहले बना लो खुद के राइट. जो यूट्यूब से देख के आप बना सकते हो वो बना लो, बिकॉज दैट विल गिव यू एन बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेमवर्क दैट यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट ऑन. व्हेन यू go on to learn any cloud platform, be it Google Cloud, AWS, Azure, any, right? First basic thing is you should know Linux, right? That's what everybody gets wrong. They directly try to hop on and they get stuck, like how this command is gonna work. Hi Pratik, how are you? Hi, I'm good. How are you, both of you? We are doing great. This is my colleague Priyanka and I am Ashwarya. So we both will be taking your podcast. So कैसे चल रही है life IT में? It's been good. Actually, most of my time is going a little bit slow because I work from home. I think that's a perk of IT, right? Everybody wants that. So life has been good lately, and weather is nice in Pune here. So yeah, it's been good. Okay. Can you give us your basic introduction? At least my audience will get familiarized with you, and then हम लोग बाकी का podcast थोड़ा smoothly run कर सकते हैं. Sure. Hello all, my name is Pratik Kai. I am a software engineer at Impulsive Web, and I have been at tech for 3 years now. And I also run a community in Pune called GDG Cloud Pune, Google Developer Groups. And I have been a part of that community for 5 years now. I started as a volunteer and now I'm one of the organizers. And tech has always been an integral part of me, right? And so I enjoy doing tech regularly. Even I don't feel like it's my job, right? It's my hobby. So yeah, I am a person who loves tech. I also, if you want to talk about my hobbies, I am a photographer also. I own a camera. I like to explore specifically street photography, and I also like to go on bike rides. So it's the perfect weather for bike rides here in Pune out there, right? So I own a Royal Enfield, so I feel like it's great to, I just want to, when I want to clear my head, right, I just get out with my bike and do a small ride and come back to it. It has helped me solve tech problems also. So both is balancing out quite good, I would say. Yeah, that's all about me. Okay. So can you tell about your journey from college to becoming a senior software engineer? Okay. So, okay, so if we take a little bit of different route, say बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इंजीनियरिंग इसलिए चूज किया कि और कुछ नहीं था करने को, राइट? Right. बट आई वुड से आई एम एन एक्सेप्शन टू दैट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू इंजीनियरिंग, राइट? And specifically computer or software engineering. Why I would say, because when I was in my fourth standard, right, it goes back to that. There is an exam, a scholarship exam that happens in specifically Maharashtra state, and my father was like, if you top in that in the school, I'll get you a laptop, right? So, and I did that. I got my first laptop when I was in my fifth standard, and that's how I got hooked onto tech. And Great. on that day, I decided, no, I want to be a software or a computer engineer. I want to do something with computers, right? So that's how I entered college, right? And as it was my interest from the beginning, I don't think it was that hard for me to go through college, right? Because a lot of people say engineering is one of the most hardest degrees in the world, right? So college journey has been very smooth for me. Most important part, I had good mentors during college. Right, I think that is one of That the is most very important thing. thing. And I studied in MIT Academy of Engineering, that is based in Anandi. So it's autonomous college. College was always helpful for us. You know, I have traveled to a lot of events and did events in college also and talked with a lot of students. So college to if we talk about my professional journey now, once I did my graduation, as I mentioned, I run this community in Pune, right?
So I was looking for jobs, and if you see 2 years back, the market was not that good. It was quite a recession going on. Mm-hmm. But as I grew my network through community and volunteering, right? So that helped me get a job, because I knew a lot of people who are running companies, who are integral part of companies, VPs, Mm-hmm. right? Or maybe some manager level people. So they were interacting with me through these events. So I just like, hey, how are you? I am looking for a job. Is this something that you want? This is my profile, right? So I Mm-hmm. talked to a few people. I got few interviews, and I got into that, because see, applying on LinkedIn and everything is fine, but again, on LinkedIn, thousands of applications are received every day, right? So yeah, that is something, that is how I started my professional journey. Now Journey. it's been 2 years, 2 to 3 years now. Can see I started with basically front end. My go-to framework was React. I started with React, and eventually I move on to back end. I dabbled with the Python also a little bit. थोड़ा सा Python में भी मैंने code किया, as my major was machine learning during my college days. So Python also has I worked in, but majorly my bread and butter is JavaScript, TypeScript. That's what I Okay. work in, JavaScript, and for backend we use Node.js. And database, if you want to say, my favorite one is Postgres, Okay. because it scales very well. It's open source, and if you want to do and use an unstructured database, MongoDB is the way to go. But mostly we prefer using Postgres. Uh, yeah. So that's how I started my professional journey. Then like lean to backend a little bit, and now currently I'm on my way to become a full stack developer. So yeah, Okay. that has been my journey from college to my professional life currently. Okay. Yes. So you mentioned GDG Yeah. community. Yeah. So what is exactly GDG? Full So form and all. if we go as a full form, GDG is Google Developer Groups, Okay. right? So Google Developer Groups is an initiative by Google itself. It is centrally managed by the Google team. If we talk about India specifically, we have around 60 to 70 chapters all over India, and every chapter has 3 to 4 organizers. So I am one of the organizers for Pune chapter, and this is a worldwide program actually, not only limited Okay. to India. I Yeah. think, if I'm not wrong, all over world, more than 300 or 400 chapters are over there. The number might be wrong. Please verify once. Yeah, But yeah, yes, no problem. around 300 to 400 chapters is my guess. Okay. But it's a program basically who wants to connect, professionals and students Mm-hmm. specifically to get their journey started into their professional life. And if you are already in your professional life, you are exposed to specific Google tech and open source technologies. Okay. So if I dive it deep into a little bit, what we do is we organize monthly events. So basically, as I am the organizer for Pune, we do monthly events in Pune. So that is specifically based on cloud, and as now we see the buzzword AI. AI. Okay. So, and a lot of people come to our events and they get exposed to new technologies, specifically cloud and AI. And we call a lot of expert speakers from Google and other companies also. Mm-hmm. So we are trying to build a network of people who can learn together and maybe find Okay. jobs and do a lot It's of not other mandatory, things. like It's not only mandatory. technical people can enroll for them No, for no. this If you are program. a person who are looking to, convert from non-technical Mm-hmm. to technical, then it's Right. a very good thing for you, because Okay. you'll meet people who are like 10 years, 15 years experience Mm-hmm. in various Oh, techs and various it companies. will be very helpful Okay. for freshers. Yes. So is this your hobby? Like speaking You can and say all? that. I mean, it's not something monetary I get out of it, right? It's all voluntary stuff that we do. Yes, we get few perks from Google itself because we are doing these things, but it's not monetary. And it's something that has helped me, right? Because when I started my career in my second year, third year of college, I used to volunteer for these communities, Mm-hmm. right? In my college also, there was a community called GDSC, which I used to lead. It was a club, specifically curated program by Google for students. So that has helped me, and again, this GDG community has helped me throughout my professional journey. And getting a job was a little bit easy for me when others were struggling for it. So I'm very thankful for that specifically, right? That's why I feel like it is my turn to give back to the community right now. So that's why I do this. So Yes. you're doing this from college, right? Yes, I'm doing from college. It's been Okay. almost 5 years now. Okay, that's great. That's great numbers. Yeah.
Okay, so we'll hop on to the project part a little Mhm. bit. Okay, so as I can see in your profile, you have worked on Google platform, right? Mhm. So is there any kind of challenges you have faced while working on it? Okay, not specifically. I'll give a generalized answer. Mhm. What students or even me, I specifically faced a problem Sure. when you go on to learn any cloud platform out there, be it Google Cloud, AWS, Azure, any, right? First basic thing is you should know Linux, right? That's what everybody gets wrong. They directly try to hop on and they get stuck, like how this command is gonna work. They don't know there are Linux is a very tricky thing. Okay, I'll say that, but because it is totally uh, operated by command line. Okay, and people are used to UI, user interface, Mhm. not by the CLI. I find myself personally CLI is the best thing, right? Mhm. It is very install do things throughout the CLI. Installing packages, installing software is very easy. Just a single line command, you get it. But once you are getting into cloud, right, learning Linux is very important. That's what I struggle with a little bit. Then Okay. I took a step back कि क्या गलत हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो Mm-hmm. रहा है ये. Then I asked around कि what should I do. Then first thing I got कि भाई Linux सीख लेना अच्छे से. अगर तुझे Linux नहीं आता है you will face a lot of issues. The Okay. first thing I would say Linux सीख लो अच्छे से. Then you move on to networking, right? Networking is a very basic fundamental जो कंप्यूटर साइंस का है, दैट यू कैन सी. तो नेटवर्किंग अच्छे से कर लो. व्हाट आर पोर्ट्स, टीसीपी, यूडीपी, प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग. नेटवर्किंग अगर आपका अच्छा है देन इट विल हेल्प यू. सो आई वुड से दीज टू थिंग्स, लिनक्स कर लो अच्छे से एंड नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ लो, देन यू विल हैव स्मूथ सेलिंग इन क्लाउड. Okay. And what currently projects you are dealing with? So currently, okay, obviously I can't reveal the name. It's a Yeah, little bit. Just I know tell that will us be that. confidential. Yeah. Just tell us what tools are you using or what technologies are you Yes, as I using. mentioned, my bread and butter is JavaScript, right? Okay. So we are working for a client which is situated in Australia, and we are building a social media platform for them. So what is their USP for that platform? They want to have a collaboration feature. Now let's take an example of Instagram. Instagram आप खुद से पोस्ट कर सकते हो, Mhm. राइट? एंड Right. अभी दे हैव एडेड अ फीचर कि आप 5 लोगों को एक साथ मिलके प्रोजेक्ट बना के यू कैन क्रिएट अ रील, Collaborate, right? right? Hmm. So what is their USP in that collaboration? They have added a few things. You can make videos through their platform and you can earn money through that platform. Okay, so now let's suppose we are 3 creators on the platform and we want to build a project. So what we'll do, we'll sign a contract throughout us. So that contraction and all that features are built in the platform itself. Mm-hmm. We'll sign a contract, how much we'll split the money Oh, once the right. video is out, right? As per what is the, like, money can be sent to directly to us or it can be generated through views or whatever ads that we are running for that specific video. Much more like YouTube. Okay. And after that, specifically you split the money, you see all the analytics and everything. So what is unique in our platform is specifically the collaboration features that we provide. So you get a Kanban board view, you can create tasks, you can assign Okay. tasks to people, you can do research, right? We are integrating AI into that, so that can help you write scripts, Right. राइट. यू कैन क्रिएट kanban boards, as I mentioned, कि वहाँ पे आप टास्क डाल सकते हो, टू डू टास्क, वॉट पिक्चर्स, और यू कैन क्रिएट अ मूड बोर्ड ओवर देयर, Okay. राइट. वंस यू हैव दैट, यू गो टू योर एग्रीमेंट, यू क्रिएट एन एग्रीमेंट कि भाई ये हमारा कंटेंट फाइनल है and this is how much we are going to split the money. Okay. And once you legally sign that, you can post that video onto the platform and you can earn money through that. Okay. So most challenging part in this, there was the full the agreement flow was, I think, one of the most challenging part, because you have to pull in data from all the users at the same time, right? And there was one more part, specifically on UI side, if you want to say, drag and drop is hard to do in React. Okay, Okay. specifically if you see drag and drop UIs, right? And as we had a lot of types of medias, photos, images, then again videos was there. So in images also, specifically handling various data types, right? So that was a bit challenging for us to do, but yeah, we got through that. Okay. So you have worked on many projects. Mhm. So which can you explain any one project which you have like which you have liked the most or you are proud of? I think this one is gotta be the one, The current because project. yeah. It's been a very complex project because I started as a front end engineer on this project,
I dwelled into backend a little bit. I created a few APIs. Specifically, now currently we are working on the payment integration part. So it is Okay. quite nice to learn how security work, like how do you protect users' data, credit card data, or specifically their UPI data, right? And then I have worked on deploying the project also. So we dockerized the whole project. So first it was monolithic architecture. It was all through in a single GitHub repository. Now we have divided it into microservices and it is running on Docker. So I have contributed in that part also. Oh, So I have done front end, back end, and cloud DevOps part for a single okay. project, right? So I have a bird's eye view on the project. So I think, and it is one of the most complex project that I have done, because most important part in social media is data first of all, and analytics, Analytics. right? The user should know where their data is going, where their post is going. So that was a little bit challenging for me to learn. It was my first time experience specifically in that part, and the payments part that we're currently focusing on, Okay. I think is one of the most interesting parts that I have worked on. Okay, great. Okay. So as you mentioned, like you also worked on DevOps, right? You Yeah. have handled the Jenkins, Mhm. Kubernetes, Docker. So how that thing is correlating to your current job role? Okay, so as I work in a startup, so my role is not defined. Ki my front end engineering, yeah, right. I am just a software engineer over there, and I have given liberty to explore whatever I want. Right. Once our sprint starts, my manager is like, pick whatever you want to pick. So if it is a DevOps related task, I can pick that. So what I did is, they wanted a blogging platform specifically with their platform. कि blogs डालेंगे हम इस पे. So we chose an open source uh, blog that is already out there, and we wanted to deploy it. So my part was just integrate that into the pipeline which is already there. So I just wanted, what I needed to do is pull that from Docker. So if I'm getting a little bit technical over here, just I'll try to be simple as possible. So what we do is we simply pull a Docker image of that open source CRM that you can say, where you can have your blogs. uh, if you want to know, there is called Ghost. It is called Ghost, that we use specifically. It's an open source blogging platform that you can directly pull and host on your own. It is simplified through Docker. आप Docker की image pull कर लो. You just add that into your Docker file specifically. So that if you have multiple containers, you have a parent file for that. कि हर एक कंटेनर कैसे चलेगा, कब स्टार्ट होगा. So you just need to add that configuration into that file. ये नया कंटेनर ऐड हुआ है, एंड आप फिर उस फाइल को रीस्टार्ट करते हो. सिंपली इफ आई एम पुटिंग दैट सिंपली. So that's a task that I did in specifically DevOps. Okay. अब मैं So, थोड़ा बहुत समझ so apart from some technical things, like what does a day in your life look like as a senior software engineer? Okay. So usually I am a night owl. Okay, I wake up late in the morning, because I like to work in the night. Okay. So usually my scrum call is at 11:30. So At I'll night. no, morning, not Okay. not night. Right. Uh, but we work in IST Mhm. only, not the Australian times. Okay. But yes, 11:30 a.m. I have my morning scrum call. I'll wake at 11:15. I'll brush my teeth and I'll sit for that. Okay, I'll give my update because I mostly my work done is in the night. कि Okay. भाई आज ये किया, आज ये issues fix हुए, and these are the new challenges that we are gonna face. What can we do? So 11:30 12 तक वो खत्म हो जाता है. Then after 12, I get my morning routine going on. It's not morning actually; it's afternoon routine that you can say. But yeah, and 12:30 I have my lunch directly, and then at 1 p.m. again I sit for work. 1 p.m. to, you can say, 4 5 p.m. I dedicatedly work like 4 5 hours of session I do. And after that, we go for a chai break. So I work through my friend's flat. Okay. Okay, I live. So my friends lives like 2 to 3 kilometers away from my home. अच्छा I get bored at home. Like, भाई मैं तेरे flat पे आ रहा हूँ. We'll work from there. We are 3 4 people that work from home, right? So our small group, and then we'll go for a chai break around 5 5:30, and then come back around 6:30. Then again I'll sit for an hour, 6:30 to 7:30, few updates that are need to be given. A 6:30 call. 7:30 I go home again and have my dinner and everything. Then I binge watch something, let's say for hour, 1 2 hours, and then I'll sit at
10 p.m. Sorted. Yeah, 10 p.m. maybe I'll sleep around one Okay, so one. what would you recommend to our fresher or like those experienced? Shall they go for work from office or work from home is Okay, sorted? okay. So बाहर से लगता है कि यार work from home is very Exactly. sorted, right? But हाँ. it's not quite like that. You don't. It's very hard to build a routine in a work from home Yeah. environment, right? But if you have to work from office, you have to get up at 9 a.m. and Exactly. do your routine and go to your office, pick out the cab and go, right? One of my friend is work from office actually, so he has to go daily. So what do you prefer, work from home or work from Oh, office or currently remote? currently I would prefer hybrid. Okay. Honestly, I would say, because actually my company is not here in Pune, it's in Noida. Okay. Right, I can't do hybrid technically, and I don't want to go to Noida. Honestly, I don't want to leave this very very nice weather, right? So yes, I would say if you are starting out as a fresher, work from office is the best thing that you should have, because as I mentioned, having a mentor is a very very big thing, and you should have a mentor. I have had mentor in my college, in my professional career, and in my community also. Especially when you're starting your journey. Yes, it is very very important. I would say having a mentor has made me like few less mistakes. कि ज़्यादा mistakes नहीं हुई उसकी वजह से, I think that I would say. And if I would say work from office karo, because see, in my case, I was already networking with people, right? You should start with networking people from your office. एक confidence आता Yes, है. correct. That's the confidence that you get, right? So work from office try karo, I would highly suggest. Or if you get hybrid work, then it's a plus point again. Fresher क्या salary bracket expect कर सकते हैं? I mean, depends. If you are a good React developer or a front end engineer, and you want to go in a startup. So basically, what happens is, now there are two ways that you can go. Okay. A lot of people say DSA karna chahiye, and fundamentals, operating systems, DBMS, these things that you should do. Then there is system design, high level design, low level design, and then there is path of development. So you can be a app developer, you can be a web developer, or maybe now there is AI also. AI engineers are also there. Right. So it depends where you want to take off your career from. So what I did is, my goal always was to start at a smaller company, right, and then work towards MNCs or the other bigger companies, because limitations in a startup are very very less. Because as I said, my role is not limited. Right. If I want to work on something, I can do that. I have heard that startups में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है. Yes, yes. So that again is was said to me by one of my mentors कि भाई तुझे अगर करना है, सीखना है अच्छे से, go with a startup. Don't go for a MNC. तुम बड़े कंपनी में सीखोगे, but the scale would not be that much. Right? Startup में आपको स्कोप रहता है बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का, बट You MNC get में good exposure there. यस, MNC में कैसा होता है कि लेट्स सपोज यू आर ऑन रिएक्ट, तो आपको बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलेगा चीज़ों का, right? But that's not the case with startup. So I would say start with a smaller company or a startup minded like company. अगर बड़ी भी हो थोड़ी सी, it is fine, but their mindset should be like a startup, right? कि हमें restrict नहीं करना है किसी को. If somebody is willing to learn and do something, it should be allowed. So start with a smaller company or a startup first of all. For that, learning basic DSA is important, easy to medium questions. You need to have your fundamentals right, specifically DBMS, operating system, these two, and DSA is database. Database also as mentioned, and data structure and algorithms. These 3-4 things, fundamental CS things, and with that, do a little bit of whatever you like. Specifically, you can start with JavaScript, or if you want to do application development, mobile app development, you can go for Kotlin, or if you want to do, you can go with Flutter. So for Flutter, you need to learn Dart, and if you want to do iOS, native iOS development, you can start with Swift. So use Swift, yeah. It's Okay. iOS का जो official language, it's called Swift. Okay. 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 So So you're also working on that? Or no, I have not you worked just on have that. I knowledge, just okay. know Okay. I have created a very very small project in Flutter. Okay. Not much in app dev. Mostly I have worked in
वेब डेव. बट आई वुड से आप DSA कर लो और उसके साथ प्रोजेक्ट्स बना लो वेब डेव के थोड़े से 2-3 प्रोजेक्ट्स. अब प्रोजेक्ट्स डोंट मेक इट वेरी वेरी जेनेरिक कि टू डू ऐप बना दिया. नो, दैट वोंट फ्लाई. सिंपल वाले नहीं, सिंपल वाले नहीं. आपका जिसमें रेज्यूम, आपका स्किल्स दिखे. यस, आपका रेज्यूम डिस्कार्ड होगा. राइट, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज माई ओपिनियन, कि आप ऐसे ऐप्स बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आपको खुद को डेली लाइफ में यूज़ हो. राइट. सो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ऐसा ही. आई यूज टू लव जर्नलिंग. राइट, कि रोज का लिख दिया, कुछ लिख लिया, थोड़े से पिक्चर्स वगैरह डाल दिए. इफ समथिंग लाइक what do you say, a good thing is happening or a bad thing is happening, anyway, a highlight of the day, or maybe some specific day that I used to write in my diary, let's say. then एक दिन मैंने सोचा कि यार इसका प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन. Oh, nice. Let's do it virtually na, because then I built that project. I took a month to build that. So and I even use it nowadays. अभी भी चल रहा है. It's like my own, मेरे personal use के लिए. I have not published it anywhere or something like that. बट दैट्स हाउ यू विल लर्न. बिकॉज अभी क्या होता है ना, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, उनको लगता है कि अभी सीखना है मुझे, देन दे गो ऑन यूट्यूब और यूडेमी में जाते कोर्स खरीद लेंगे पहले. देन आप 2 दिन देखोगे वो, ठीक है, 2 दिन के ऊपर आप नहीं करोगे, यू वोंट बी कंसिस्टेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करना पड़ेगा, लर्न बाय डूइंग इट. दैट्स प्रैक्टिकली करना पड़ेगा. अदरवाइज आप लर्निंग नहीं कर पाओगे. वो आपको सिखाएगा, फिर ये हुक कैसे चलता है, ये क्या होता है रिएक्ट में, वो क्या होता है, राउटिंग कैसे करते हैं, वो हो जाएगा. बट वो ऐसे लोग बहुत कम है जो वो एक्चुअली देख के सीख पाते हैं. राइट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न बाय डूइंग. दैट हैज हेल्प मी अ लॉट. Okay. Acha, one more thing I wanted to ask you, like whether like you have worked on back end, front end, then the DevOps is there. So and clouds is there. So which platform or which field you wanted to go with majorly, like Okay. cloud or like development? I was that kind of a person ki jack of all trades, master of none. Right. But I would say let's modify it a little bit ki master of one and jack of all trades, something like this. You should master one skill and you should know other things a little also. Right. Let's say you are a full stack engineer, आप फुल स्टैक करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत क्लाउड का ना, डेवऑप्स का नॉलेज भी होना चाहिए. नॉट नेसेसरी यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट. लेट्स सपोज फॉर सम रीजन आपका डेवऑप्स इंजीनियर उस दिन नहीं है, आपका SRE इंजीनियर उस दिन नहीं है, SRE नहीं है आपका. राइट. तो आप बेसिक थोड़े से ट्रबल शूट तो कुछ ना कुछ कर पाओ. राइट. और Don't you get jumble up, like कभी कभी ऐसे नहीं होता कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, बट काम मिक्सअप हो गया एकदम. ऐसे होता है कभी कभी. आई वुड ऑनेस्टली से दैट हैपेंस अ लॉट. बिकॉज लेट्स सपोज अभी मुझे कुछ अलग सीखना है. राइट. लेट्स सपोज आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्लटर, तो कभी कभी क्या हो जाता है, मैं जावास्क्रिप्ट का लॉजिक, दैट सिंटैक्स आई ट्राई टू राइट इन दैट. तो ये चीज़ें होती है, बट यू हैव टू बी, तो थोड़ा सा जब आप चेंज करते हो ना चीज़ें, थोड़ा सा रफ होता है, बट यू गेट यूज टू इट. बिकॉज लर्निंग भी होनी चाहिए. yes, learning भी होनी चाहिए. because see, my personal opinion as an engineer is like, no technology is good or bad. Objectively is what I'm trying to say. Everything is subjective. Now if I say React is bad or good, it is gonna be subjective to whatever my requirement is. Right. If I'm looking to build a very small project, then I would say React is good for that. Okay. Because it only comes with tools that I need. It's not like something बहुत सब कुछ नहीं दे रखा. Right. You just get what you need. But let's suppose I want to build a project which is gonna scale in the future and it's gonna be very very complex. Then I would say React is bad for that. Right. हर चीज के pros and cons Exactly. रहते हैं. So ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि कोई टेक ऑब्जेक्टिवली गुड है या बैड है, इसको सीखना नहीं चाहिए, नहीं सीखना नहीं चाहिए. आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोचो. आपको जो प्रॉब्लम दे रहा है आपका क्लाइंट, और इवन इफ यू आर फेसिंग समथिंग इन योर डेली लाइफ जो मुझे उसका सोल्यूशन बनाना है, तो आइडियल सिचुएशन शुड बी कि ऐसा नहीं कि मैं उठा और मुझे रिएक्ट में बनाना स्टार्ट किया. नहीं, दैट्स नॉट हाउ यू शुड अप्रोच इट. पहले देखो कि आप उसका एक वेब ऐप बनना चाहिए क्या, मोबाइल ऐप बनना चाहिए क्या. अगर मोबाइल ऐप आपको बनाना है, राइट, तो इज इट मोर एंड्रॉयड सेंट्रिक, इज इट मोर iOS सेंट्रिक. राइट. कौन सी यूजर्स के लिए वो ज़्यादा सही रहेगा, और इज इट कि लाइक बोथ यूजर्स यूज करेंगे. ऑन दैट बेसिस यू कैन चूज योर प्लेटफॉर्म. अच्छा. उल्टा नहीं करना है कि प्लेटफॉर्म चूज करके प्रोजेक्ट नहीं बनाना है. राइट. फाइंड अ प्रॉब्लम, you want to build a solution on that, and on based of that solution you choose a technology that you want to build on. So as
वी ट्राई टू बी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक थोड़ा सा, कि उसमें कैसे होगा कि अगर आपके पास कोई भी कुछ सोल्यूशन लेके प्रॉब्लम लेके आता है, सॉरी, तो आप उसको सोल्यूशन अच्छे से दे पाओगे. यू वोंट बी बायस्ड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क और टूल. ओके। तो अभी ना बहुत सारी टूल्स टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं मार्केट में, तो हाउ डू यू कीप अप विद दैट? Keep up with that. Okay, that's a good question actually. Most important thing is read blogs. I would say that I do definitely. I used to write blogs also, but अभी नहीं लिखता हूँ, अभी टाइम नहीं होता है कभी कभी. But yes, read blogs first of all, and there are platforms out there जहाँ आपको न्यूज़ वगैरह टेक्निक. आई फॉलो गूगल न्यूज़ एक्चुअली, बिकॉज गूगल न्यूज़ का जो अल्गोरिदम है, आई लाइक इट वेरी मच. जैसे जैसे मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ना, मुझे मेरे फीड में वैसे वैसे आर्टिकल्स आते जाते हैं. सो इट्स अ गुड रिसोर्स टू लर्न अबाउट टेक वॉट एवर न्यू इज कमिंग ऑन. आई वुड से आप जिसमें अभी काम कर रहे हो ना कंटिन्यूसली, उसमें देखो कि कौन से लोग हैं जो चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं. क्या राइट. ट्रेंड्स चालू है? यस. सो अभी लेट्स सपोज यू आर इन रिएक्ट. हम्म, राइट. रिएक्ट में अभी जैसे रिएक्ट का फ्रेमवर्क आया, बाद में नेक्स्ट जेएस आया. राइट. नाउ यू कैन फॉलो हुएवर इज डूइंग गुड इन नेक्स्ट जेएस. ओपन सोर्स में कौन कौन क्या चीज़ें कर रहे हैं, यू कैन फॉलो दोज यूट्यूब चैनल्स. तो आपको खुद से जाके रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा. वंस यू गेट दैट, यू विल गेट द रिसोर्सेज ऑन योर ओन. ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि इसको जाके देखो, उसको जाके देखो, दैट वोंट हेल्प यू, बिकॉज योर अप्रोच माइट बी डिफरेंट देन मी, हम्म। वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट फॉर. तो मतलब अभी आपको क्या लगता है कि फ्रेशर्स है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईटी भी है, नॉन आईटी स्टूडेंट्स है, आईटी स्टूडेंट्स है, तो फ्रेशर एज अ फ्रेशर सर्टिफिकेशंस करने चाहिए या नहीं? What kind of certification? मतलब कोई भी Generalize. जनरल सर्टिफिकेशन, कोई क्लाउड का हो Mm. या मतलब जिसमें आगे जाना है. Certification helps, हम्म, but the most important thing, you should have those skills, because certification नॉलेज, copy करके राइट, भी आप कर सकते हो, right? राइट. If I'm trying to be directly honest. सो प्लस But पॉइंट होता yeah, है. plus point होता है. Yes, I would say plus point होता है, because if you have a candidate, right, दो candidates है, एक के पास certification नहीं, एक के पास है, तो प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग में it will help you. ओके. राइट. इन दैट केस इट विल हेल्प यू. बट अगर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको स्किल्स के ऊपर से ही वो लोग हायर करेंगे. आपके पास सर्टिफिकेशन है, इट वोंट मैटर दैट एट दैट एंड पॉइंट. व्हाट अबाउट इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग, वो हेल्प करेगा? इंटर्नशिप्स, आई वुड से फ्रीलांसिंग का कैसे होता है थोड़ा सा, इफ यू टेल इन द इंटरव्यू दैट आई एम फ्रीलांसिंग, इट्स हार्ड टू वैलिडेट. इंटर्नशिप में आपके पास व्हाट यू हैव इज, आपको वो लेटर मिला है कंपनी से या कुछ ना You कुछ have the मिला है. इफ यू proper हैव, documents and all. या राइट, उसके आपको इंटर्नशिप पे हुआ है उसका भी प्रूफ होता है. आपका फ्रीलांसिंग का भी होता है. आई एम नॉट सेइंग आपने प्रोजेक्ट बनाया आप वो दिखा सकते हो, बट सेटलिंग इन फ्रीलांसिंग इज अ लिटिल बिट हार्ड देन सेटलिंग इन इंटर्नशिप. एंड फ्रीलांसिंग में कैसे होता है कि यू नीड टू फिगर आउट थिंग्स ऑन योर On ओन. your own. Right. If you already know, if you already have experience in building things, building solutions, then I would say definitely go into freelancing. Right. But if you're just starting out, start with an internship, because there you will have people who will guide you. आपको बताएंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे अप्रोच करना है, इसको ऐसे अप्रोच नहीं करना है. राइट. फ्रीलांसिंग में आपको फिर ऐसे करके खुद गलतियाँ करके सीखोगे आप. राइट. एंड गेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड गेटिंग क्लाइंट्स अगेन इज वेरी वेरी बिग हैसल. सो फ्रीलांसिंग में कैसे होता है, लेट्स सपोज इफ यू आर टेकिंग एन एंगल ऑफ टेक डायरेक्टली, राइट, तो उसमें बाकी आपका सेल्स का एंगल भी थोड़ा सा आता है उसमें. राइट. कि सब कुछ आपको, हैंडल करना हाँ, सब कुछ पड़ता है. हैंडल करना है. आपको पिच डेक बनानी है, आपको खुद को पिच करना है. राइट. दीज मेनी प्रोजेक्ट्स आई हैव बिल्ड, आई एम एक्सपर्ट इन दीज टेक्नोलॉजीज. सो वो पार्ट भी आता है. आई वुड से कि इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, डोंट गो directly jump into freelancing. In future obviously you can, but start with an internship. कि इन अ कंपनी, स्मॉलर कंपनी, बिगर कंपनी, डजेंट मैटर, इंटर्नशिप आप कहीं पे भी कर सकते हो. वो स्टार्टअप में ही करनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डिड इंटर्नशिप्स इन बिगर कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन में किया है. देन लेटर डाउन द लाइन देयर फुल टाइम जॉब्स आर इन स्टार्टअप्स. Okay. So आप हमारे ऑडियंस को एक क्या एडवाइस दोगे? Advice? I don't think I'm that senior to give advice actually, मतलब but फ्रेशर्स को. yeah, I Fresher would और say like हमारे नॉन टेक्निकल पीपल हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, what would you recommend them? Okay. So when you are starting out in tech, tech is very very vast. First of all, don't feel overwhelmed. Right. आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो कि मुझे सीखने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है. सब थोड़ा थोड़ा करके देख लो. थोड़ा सा वेब करके देख लो, थोड़ा सा क्लाउड में जाके देख लो, थोड़ा सा ऐप बना के देख लो. यू विल गेट कि मुझे क्या पसंद आ रहा है. राइट. व्हेन यू फाउंड आउट कि हाँ मुझे ये पसंद आ रहा है,
build good skills into that and try to learn other things. As I said कि be master of one tech and jack of all, right? So एक master करने में आपको time लगेगा. It will take you like good 1.5 2 years to do that because बहुत सारी चीज़ें आती है tech, right? It is very very easy to feel overwhelmed. वो सीख लो आप, then try to dabble with other tech also. Don't be platform agnostic, as I said, and try to find good mentors. That is very very important. वन लास्ट क्वेश्चन प्रतीक, अगर कोई फ्रेशर है तो मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना करियर आईटी नॉन आईटी बैकग्राउंड से है लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसने काम नहीं किया कोई प्रोजेक्ट्स पे, तो वो कैसे बिल्ड करेगा अपना पोर्टफोलियो? प्रोजेक्ट्स, बेसिक प्रोजेक्ट्स आप पहले बना लो खुद के, राइट? जो यूट्यूब से देख के आप बना सकते हो वो बना लो, बिकॉज दैट विल गिव यू एन बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेमवर्क दैट यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट ऑन. लेट्स सपोज आपको रिएक्ट अच्छा लगा तो रिएक्ट के बना लो 2-3 नॉर्मल, एंड देन एज आई सेड ट्राई टू फाइंड प्रोजेक्ट्स विच आर यूनिक टू यू, that you can relate to. As I said, मैंने जो जर्नल वाला प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। राइट? सो ट्राई टू फाइंड समथिंग लाइक दैट. आप खुद का कुछ बनाओ, या यू कैन ट्राई टू बिल्ड क्लोन्स ऑल्सो. आप ओके। क्लोन्स बनाते हो ना, उससे भी अच्छा एक्सपोजर मिलता है. सो व्हेन आई वाज ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, मुझे नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने के लिए बोला था. Okay. नॉट Exactly same. एपीआईज वर गिवन टू मी. ये डेटा है, तुम्हें डिस्प्ले करना है बेसिकली, अच्छा। नॉट द स्ट्रीमिंग पार्ट एक्चुअली, बट जस्ट द यूआई पार्ट, टोटली मेक इट रिस्पॉन्सिव एंड एवरीथिंग. तो क्लोन्स बनाना भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर देगा स्पेसिफिकली. वंस यू आर आउट ऑफ दैट स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड क्लोन बनाने में आप कंफर्टेबल जब फील करते हो, then I would say start building your own projects and put those on resume. Don't put your clones or small projects on resume, because let's suppose आपका resume हार्डली 7 to 10 seconds के लिए पढ़ा जाएगा, राइट? फ्रॉम द एचआर और रिक्रूटर. अभी अभी तो ऐसा होता है कि डायरेक्टली ऑटोमेटेड एटीएस से रिज्यूम्स पढ़े जाते हैं, राइट? बट लेट्स सपोज आपने किसी को बाय हैंड भी दिया है रिज्यूम, तो वो जब देखेगा कि इट इज समथिंग डिफरेंट दैट आई सी थ्रू आउट द क्राउड, देन दैट इज अटेंशन ग्रैबिंग. एंड a few people have told me कि ये अलग है, राइट? आई हैव नॉट सीन दिस. मतलब करते हैं लोग, बट इट्स नॉट दैट कॉमन. सो इट विल हेल्प यू टू यू नो grow out of all of the crowd and spark a little bit over there. So राइट। this is very mandatory for freshers as well to Yes. do the projects, like to at least start your own projects. Start your own projects. Yes. Okay, मतलब जितना ज़्यादा स्किल शो कर सकते हो करो प्रोजेक्ट्स में। Yes. that will help them to. बिकॉज कंपनीज के लिए क्या होता है ना, उनको चाहिए एक्सपीरियंस, राइट? Exactly. फ्रेशर के पास नहीं होता है एक्सपीरियंस. द एक्सपीरियंस दैट यू कैन शो इज थ्रू योर प्रोजेक्ट्स. एंड आपका इंटर्नशिप्स में जितना भी हुआ है, जब भी आप रेज्यूम में लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव लिखो थोड़ा सा. ज़्यादा भी मत लिखो कि भाई मैंने ये किया. बट रेज्यूम में मैंने एक गलती बहुत देखी है कि पीपल जस्ट से मैंने ये किया वो किया, राइट? कि आई डिप्लॉयड दिस, आई बिल्ड दैट, बट उसका इम्पैक्ट क्या था वो भी लिखो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि लेट्स सपोज आई बिल्ट अ प्रोजेक्ट फॉर माई कॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किया था सेकेंड ईयर में विथ माई फ्रेंड. सो इट वॉज अ सिस्टम दैट यूज टू वर्क मैनुअली इन आवर कॉलेज. वी ऑटोमेटेड दैट. सो जो काम करने के लिए 1 महीना लगता था, दैट हैपन्स इन अ वीक नाउ, राइट? तो दैट शोज इम्पैक्ट, राइट। राइट? सो यू नीड टू मेंशन कि ये प्रॉब्लम था, ये मैंने सॉल्व किया, मुझे ये टास्क दिया था, और उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया डायरेक्टली इन दैट फॉर्मेट. सो इफ यू राइट दैट, वो रिक्रूटर के लिए समझने के लिए भी बहुत ईजी होता है कि इसने एक्चुअली किया क्या है. मैंने बोल दिया कि मैंने कर दिया डिप्लॉय करके, आगे क्या हुआ नोबडी नोज, राइट? हियर यू नो व्हाट वाज द एक्चुअल इम्पैक्ट. एंड कंपनीज को इम्पैक्ट ही मैटर करता है. Exactly. कंपनीज को आजकल वही है, लाइक कितना आउटपुट तुम लोग देते हो कंपनीज के लिए, और बिजनेस ग्रोथ को वो कैसे हेल्प करता है. Exactly. Right? Okay. थैंक यू This is प्रति, इट वाज रियली नाइस really टॉकिंग nice. टू यू। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को बहुत फायदेमंद रहेगा ये पॉडकास्ट। एंड बिकॉज ऑफ यू हम लोगों को भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी अंडरस्टैंड हुए, हम लोगों को समझा कि एक्चुअल में क्या क्या होता है. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल और व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, देयर इज़ वेरी लाइक हम लोग बोलते हैं बहुत डिफरेंस होता है कि करंटली इंडस्ट्री में भी क्या क्या होता है और स्टूडेंट्स क्या क्या लर्न कर रहे हैं. तो समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो बिगिनिंग होता है उनका करियर, वहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं. तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप अगर आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट्स फ्रेशर है, व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग एंड हाउ यू कैन टेल देम टू अवॉइड दोज थिंग्स? मिस्टेक स्पेसिफिकली, इफ आई वांट टू जनरलाइज अ लिटिल बिट, यही लेवल पे होती है कि मैं करूँ क्या वो समझ में नहीं आता.
कि शुड आई गो द डीएसए राउट, डीएसए करना है मुझे, या मुझे वेब डेव करना है, या और कुछ करना है। तो बेस्ट थिंग इज़ फिगर आउट व्हाट यू लव। आपको हम्म, क्या करने में मज़ा आता है वो देखो। वो आप एक बार डिफाइन करोगे तो आपको काम काम नहीं लगेगा पहले तो, ठीक है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन द सेम फील्ड, इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू, बिकॉज आप उसी स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करोगे कि मुझे करेक्ट है। यही आता है, मुझे ये करना है, एंड आई वांट टू लर्न दिस। सो वेब हम्म, में अगर आपको सपोज आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे वेब में कुछ ना कुछ करियर करना है। सो वेब में मैं ऐसा पकड़ के नहीं बैठूंगा मैं रिएक्ट का ही जॉब करूंगा, आई विल डू एंगुलर व्यू, जो भी जॉब मुझे आएगा, बिकॉज माई फंडामेंटल इज जावास्क्रिप्ट। तो वेब करना है तो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट अच्छा कर लो, हम्म, उसके ऊपर इंटरव्यूज होंगे आपके। देन जस्ट फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ जॉब लिस्टिंग्स डायरेक्टली, कि जावास्क्रिप्ट के कौन से जॉब है। फिर थोड़ा थोड़ा लर्न अबाउट ईच एंड एवरी फ्रेमवर्क, क्या क्या है, आप इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ इतना, एंड बिल्ड योर बेसिक लॉजिक अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला मिस्टेक वही होता है कि समझ नहीं पाते कि क्या कहाँ से करना है चालू करना एग्जैक्टली, है। कहाँ से चालू करना है। तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। इवन आई वॉज कन्फ्यूज टिल माई थर्ड ईयर कि मुझे क्या करना है। आई वॉज डूइंग अ लिटल बिट ऑफ ऐप डेव, वेब भी कर रहा था मैं, क्लाउड भी कर रहा था मैं, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, सो आई वॉज कन्फ्यूज अ लिटल। बट देन आई सैट डाउन विथ माई मेंटर, जो मेरा सीनियर था, एंड देन आई टोल्ड हिम कि लाइक दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, व्हाट शुड आई डू, राइट। ही सेड कि एक चीज़ पकड़, उसको कर ले पहले अच्छे से, देन बाकी की चीज़ों को तू जाके फिर टच कर सकता है, बट स्टार्ट विथ वन थिंग वन फर्स्ट थिंग ऑफ ऑल। ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझने को भी मिली। थैंक यू सो मच कि आप अपना सैटरडेज को टाइम निकाल के आए हो। I love doing these kinds of things and sharing whatever I have with the people that me can help them. So yes, it was a very nice experience, आई होप and हमारी ऑडियंस को भी पॉडकास्ट yeah, अच्छा I hope लगेगा। that I provide value to, if someone is listening to this. Yes. ओके, थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you for यस, inviting me. यस, Yes. थैंक यू सो मच। बाय बाय। Bye.